Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have done sole proprietorship business. हमने क्या कर लिया था? हमने sole proprietorship business finish कर लिया था. So we'll just revise sole proprietorship business in short. Now what is sole proprietorship business? It's a business which is carried out by a single owner. वहाँ पे सिर्फ एक single owner होता है जो कि business को चलाता है. Business is of small scale because, as you all know, that he is the only one person who is contributing the capital. So the business is of small scale. Since there is only one person, he will have to bear all the losses that occurs in that business, and he will have to enjoy all the profits. He need not to share with anybody. क्योंकि वो एक ही पर्सन है तो क्यों शेयर करेगा. So profit also goes in his pocket and loss also he has to bear it. Here there is no separate legal entity. That means the identity of a businessman and of his business is same. लॉ की नजर में दोनों की आइडेंटिटी सेम है, बिजनेस की भी और बिजनेसमैन की भी. Here in sole proprietorship business, the sole proprietor has unlimited liability. Unlimited liability means कि अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो उसके बिजनेस एसेट्स तो सेट किए जाएंगे टू पे ऑफ द लायबिलिटीज. बट अगर पूरी लायबिलिटी नहीं पूरी हो पा रही है, देन हिज पर्सनल एसेट्स कैन आल्सो बी सोल्ड आउट in order to fulfill the entire liability. Okay students, so this is what sole proprietorship business is all about. There is one more point that there is no legal formality. यहाँ पे ऐसी कोई बहुत legal formality नहीं है. Therefore, it is very easy to form and easy to close this business. Okay. So students, this is sole proprietorship business. Now today our next topic is joint Hindu family business. Now joint Hindu family business is another form of private sector enterprise. जैसे हमने एक sole proprietorship business पढ़ा जो कि एक private sector enterprise है, the same way the another business organization that we are going to study is joint Hindu family business. This is also a private sector enterprise. In short, we call joint Hindu family business as JHF. In short, we call it as JHF. Now, what is JHF or joint Hindu family business? It is a business which is carried out by members of Hindu undivided family. ये वो business है जो कौन चलाता है? Members of Hindu undivided family. Now what is Hindu undivided family? Hindu undivided family is simply the joint family. In India, we still have joint families. Right? We have this tradition wherein the grandparents are living together. The family of 2 brothers or 3 brothers, they all are living together. That is joint family, जहाँ पे सब मिलके रह रहे हैं. ग्रैंड पेरेंट्स भी, 2-3 भाई के पूरे फैमिली साथ में रह रहे हैं, वो क्या होती है? जॉइंट फैमिली. राइट. तो ये क्या है? जॉइंट फैमिली बिजनेस क्या है? ये वो बिजनेस है जो कि कौन चला रहा है? मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली, और यू कैन कॉल इट एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अनडिवाइडेड क्या होता है? जिसका डिविजन नहीं हुआ है, जो कि जॉइंट साथ में रह रहे हैं. तो ये वो बिजनेस है विच इज कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली, or you can say Hindu undivided family. Okay. Now, in order to start this business, you have to fulfill 2 conditions. The 2 conditions should be satisfied in order to start joint Hindu family business. Now, what are these 2 conditions? The first condition is presence of one ancestral property. There should be existence of one ancestral property. एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि एंसेस्ट्रल मतलब खानदानी, जो आपके फोरफादर्स ने ले रखी है, वो जो खानदानी प्रॉपर्टी है एक होना जरूरी है. एंड दी अनदर कंडीशन इज दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली. इन द फैमिली देयर शुड बी 2 at least
मिनिमम तो 2 मेल मेंबर्स होने ही चाहिए, राइट। कोई भी हो सकता है, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, राइट, मे बी योर अंकल, मे बी योर फादर, anybody can be there. So there should be at least 2 male members and there should be 1 ancestral property. अगर ये है, then only you can start this joint Hindu family business, right? Okay students, so what we have learned about ये business क्या होता है, definition हमने कर ली, and we have learned about the 2 conditions. Okay, now students, this business is governed by rules and regulations which are mentioned in Hindu Succession Act 1956. There is an act, पूरा एक act है जहाँ पे joint Hindu family business से related सारे terms and conditions, rules and regulations, everything is written. वो कौन सा act है? Hindu Succession Act 1956. So this act governs joint Hindu family business. ये act के अकॉर्डिंग आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाना है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रजिस्टर्ड विद हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है, नो कंपल्शन फॉर रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है, बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सब कहाँ मेंशन्ड है? दैट इज ऑल मेंशन्ड इन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. दैट मीन्स दिस एक्ट गवर्न्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हु इज द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इस बिजनेस का हेड कौन होता है? इस बिजनेस का हेड होता है कर्ता. ठीक है, इस बिजनेस के हेड को क्या बोलते हैं? वी कॉल हिम कर्ता. बट हु इज कर्ता? दिस शुड बी बिजनेस एक्चुअली. ओके, हु इज द हेड ऑफ दिस बिजनेस? कर्ता. But now who is Karta? Karta कौन होता है? Karta is the eldest male member of the family. Whoever is the eldest male member, eldest male member. Mind it is male member, not female member. So the eldest male member is the Karta. Now suppose in the family, grandfather is there. ओके, तो ग्रैंडफादर कौन हो जाएंगे? कर्ता. Why? Because as we all know that he is the eldest male member. Now suppose grandfather is not there. I mean, उनकी डेथ हो गई, he is not there. तो कौन कर्ता हो जाएगा? Whoever is the eldest male member. Suppose your father is the eldest male member of that family. So your father will be the कर्ता. तो जो भी घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा, he is known as Karta and he is the head of that business. Okay. Now Karta takes all the decisions. Karta takes all decisions regarding this business. That means entire control is in hands of Karta. Karta के हाथ में ही सारा कंट्रोल होता है बिजनेस से रिलेटेड. बिजनेस में क्या करना है, क्या डिसीजंस लेना है, कौन लेता है? कर्ता. राइट, तो ये तो हुआ कर्ता. नाउ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली एक्सेप्ट दैट कर्ता, कर्ता को छोड़ के जो और मेंबर्स हैं, वी कॉल देम एज co-partners. We call them as co-partners, and if you want you can also call them as co-partners. Co-partners, right? So you can call them as co-partners or co-partners. कर्ता को छोड़ के जितने भी लोग हैं उन्हें co-partners या co-partners कहते हैं. Okay. Now co-partners or you can say co-partners, they do not take any decisions. They do not have the right to take any decisions in that business. Who takes the entire decision? Karta. And
फॉलो किसे करना है, काम किसे करना है, बिजनेस एक्टिविटीज किसे मैनेज करनी है, को पार्टनर्स को। तो ये कोई डिसीजंस नहीं लेंगे, ये बस मैनेजमेंट का काम करते हैं। सो एंटायर डिसीजन मेकिंग इज इन हैंड्स ऑफ कर्ता, दे जस्ट फॉलो इट, को पार्टनर्स दे जस्ट फॉलो इट। ओके students, if you remember, we have done one point, that is unlimited liability, when we were doing sole proprietorship business, and I had told you there also that this point is repeated in every form of business organization। आप हर form of business organization में ये point जरूर पढ़ोगे। Students, the liability of कर्ता is unlimited, the liability of कर्ता is unlimited, and liability of co-partners is limited। Unlimited liability, as we have discussed, that in case of business loss, the personal property is also attached to pay off the liability। कि अगर लॉस हो गया तो कर्ता की जो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है, खुद के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, दैट विल ऑल्सो बी सोल्ड आउट टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। तो कर्ता की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, बट द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड to the amount of capital they have contributed in the business। जितना भी को पार्टनर्स ने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो उनको कितना लॉस होगा, सिर्फ उतने तक का ही लॉस होगा, उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जाएगी in order to pay off the liabilities। So here all the co-partners, जितने भी co-partners हैं, they have limited liability, limited to the amount they have contributed in the business। And कर्ता की कैसी है, unlimited liability, that means his personal property can also be attached to pay off the liability। सारे decisions कौन लेता है, all the decisions are being taken up by कर्ता, and the business activities they are managed by co-partners। मतलब सारे decisions ये लेता है, उसके according ये लोग काम करते हैं। I hope student this is clear, right? Now student, there comes a question। अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या था, उसमें ये था कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है और he becomes insane means he becomes incapable of handling the business, तो बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस will also shut down। यही पढ़ा था हमने। यहां पे क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में है कि इफ कर्ता डाइज, if that head of business dies, it doesn't mean that business will come to an end। ऐसा नहीं होगा। अब कौन कर्ता बन जाएगा, सपोज अभी जो कर्ता है उनकी डेथ हो गई, अब कौन कर्ता बन जाएगा, the second eldest male member, I'm writing it here, second eldest male member will become कर्ता। जिनकी डेथ हुई उनके बाद जो भी एल्डेस्ट मेल मेंबर है, he will become कर्ता and the business will continue। पर क्या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ऐसा था, उसमें ऐसा नहीं था। If the owner dies, the business also dies with him। But here, if कर्ता dies, the second eldest male member becomes the कर्ता and the business continues। Okay। Now students, the question arises is that what we have to do in order to become the member of this business। इस business का part बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। Now in order to be a part of this joint Hindu family business, you just need to take birth in such kind of a family। अगर आपका birth ऐसी family में हुआ है, joint Hindu family में हुआ है जहाँ पे ऐसा business है, तो आप ऑटोमेटिकली बर्थ होते ही, आपका जैसे जन्म हुआ, आप उसके क्या बन जाओगे, यू विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो दैट मीन्स देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि बहुत फॉर्म्स भरने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू हैव टेकन बर्थ, देन यू बिकम द मेंबर ऑफ दैट जॉइंट हिंदू फैमिली business। Students, there are two more concepts related to joint Hindu family business, that is Daya Bhaga and Mitakshara। Now what is Daya Bhaga? Daya Bhaga used to prevail in West Bengal। ये जो दया भागा वाला कंसेप्ट है, ये कहाँ पे होता था,
ये होता था वेस्ट बंगाल में. एंड मिताक्षरा, दिस कंसेप्ट वाज फॉलोड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. Dayabhaga used to prevail in West Bengal, Mitakshara all over India except West Bengal. Okay. Now, according to Dayabhaga, both male and female, they have the right in business property and as well as in business. Dayabhaga के according मेल फीमेल दोनों को राइट था बिजनेस में और बिजनेस की प्रॉपर्टी में. मिताक्षरा के अकॉर्डिंग क्या था? दैट ओनली मेल मेंबर्स दे यूज्ड टू हैव राइट इन बिजनेस एज वेल एज बिजनेस प्रॉपर्टी. तो दयाभागा में बोथ फीमेल एंड मेल हैड द राइट एंड इन मिताक्षरा ओनली मेल हैज द राइट in business and business property, right? ये concepts पहले थे. There was amendment bill that was passed in 2004. December 2004 में एक bill amendment pass हुआ. A bill was amended and उसके according ये दोनों concepts हटा दिए गए. Okay. और सिर्फ क्या हो गया कि अब से मेल एंड फीमेल का इक्वल राइट रहेगा सब जगह, ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल का बिजनेस पे और बिजनेस की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट रहेगा. तो 2004 से पहले क्या था कि दयाभागा तो वेस्ट बंगाल में था जहाँ पे मेल फीमेल का इक्वल राइट था. मिताक्षरा वाज ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल जहाँ पे किसका राइट था? ओनली मेल. Right. And after that amendment bill that was passed in December 2004, according to it, both male and female will be having right in business as well as business property. Okay. And if you see your books, if you have the new edition books, ये जो दयाभागा मिताक्षरा का concept ऐसा लिखा भी नहीं है. Okay. Now students, this is what joint Hindu family business is. We'll just revise it once again. It's a business which is carried out by joint Hindu family, which is carried out by Hindu undivided family. If you want to start this business, there are two conditions that you need to satisfy. The first is there should be one ancestral property, and second is that there should be at least 2 male members in that family. Okay. Who is the head of that business? Karta is the head of the business who takes the entire decisions. He has unlimited liability. That means his personal property can also be attached to pay off the liabilities. Karta कौन होता है? He is the eldest male member of that family. He only becomes the Karta. Now if the Karta dies, then the business doesn't comes to an end. Business end नहीं होता है. अब कौन Karta बन जाएगा? The second eldest male member of that family. He will become Karta and business will continue. All other members, Karta को छोड़ के जितने भी members हैं, they are known as co-partners. You can also call them as co-partners. They do not take any decisions. They just manage the business activities. Their liability is limited to the amount they have contributed in their business. That means their personal property will not be attached to pay out the liability. Okay students, now the last point that is left is Hindu Succession Act 1956 governs joint Hindu family business and यहाँ पे registration कराना is not compulsory. Okay, so students, these are the main points related to joint Hindu family business. I hope you must have understood it. Thank you.